Hello everyone, are you able to hear me? Can you see me? I am not sure. Just write in the message if you are able to hear me and I will start the session. Hello everyone. Oh, you people are already here. Hi Veertika. Hi Rambhaji. Wow, there is a proud student of Unacademy here as well. Hello Sunita. Hi Nirja. Nice. So hello everyone, hello. So today we are going to study about light, shadows and reflection. It's a very sweet chapter, it's something which we already know, and it will be very simple for us to just skim through it, go through it once and understand all the concepts in that. So is anyone else going to join or should I start the lesson already? Okay. Hi Antra, hi Aryan. Nice to meet you. Did you all have lunch by the way? It's 3 o'clock. Yeah, you might have had the lunch by now. Nice. Okay, so we'll start. And as I said, today we are going to study about lights, shadows, and reflections. It's going to be a cool chapter. And if you have not subscribed to our channel already, do it right now because you are at Unacademy, which is the largest learning platform in India right now. And you know what? If you students just come to my class, I'll make it the best platform as well. It already is, right? Yeah. So what we are going to do now is quickly go and subscribe this channel. Ask your friends, your classmates, maybe even your cousins who are in class 6, 7 or 8 to come and subscribe the respective channels. And then we can move on. So mostly probably you don't know me. So I'll give a brief introduction about myself. So my name is Mohammad Al Khalid. I am a fresh graduate from IIT Guwahati. I did my bachelor's in design from there and I'm very excited to come into this field now and take classes for you. So as I said, I am a designer and as a designer I made a lot of content already. I made films, I made documentaries. I love storytelling and that is what we are going to do over here as well. Cool? So let's see what we are going to cover today. So in this chapter, we are going to learn first of all what is light. I know you know what light is, but we have to just look at the definition of light. What is light? Then we are going to have a look at luminous objects, non-luminous objects. Then we will look at transparent, translucent, and opaque objects. So you people already know this. And then we'll look at shadows. Can we look at shadows though? Because do shadows even exist? See, that's one thing which we are going to talk about today. Then there is pinhole camera. So I thought I will talk about pinhole camera today, but what I am going to do is I'm going to make a separate video about pinhole camera, and in that video we are actually going to make a pinhole camera and then play around with that. Okay, so in this video we are just not going to go in details of pinhole camera, but I'll make another video in which we are going to experiment and make an actual pinhole camera. And finally we are going to talk about the reflections and mirrors. So first of all, what is light? So imagine there is a room. You just woke up in late night. There is darkness everywhere. Will you be able to see anything? Can you see? No, there is no Menti today. And okay, cool. So Menti will be there. I'll be coming regularly. You people are asking me why am I not regular. So there were some things which I had going on. So because of that, I was not regular. But from now on, I will be regular. I will be taking class every day. So yeah, I'll be coming every day now. So let's continue with this. So now what is going to happen is there is no Menti today, dear. So
a dark room, when you are there, you're not able to see anything. And that is because there is no light. Yeah, obviously you know this already, but why do you see in a light? That is what we are going to learn in this chapter today. So light is a form of energy which enables us to look at things, which makes things visible. Understand? So now there can be two different kind of objects, right? For example, look at my phone. Is any light coming out of my phone? No, right? What about now? Can you see some light coming out of my phone? There is a torchlight over here, right? Yeah. So what is happening here is that this torch is emitting light, right? So this object basically became a source of light now. This torch which is there, which LED light which is there in my phone, is emitting light and it became a source of light. So what does a source of light does? A source of light gives light. And when it gives light, it becomes a luminous object. So there are many different objects which emit light or which give off light. Can you give me some examples? I'm reading the comments now. Yeah, give me some examples of objects which give light. Yeah, Saksham, Dubey. Examples, guys, I'm not seeing any examples over here. Waiting. Okay, so yeah, sun is a good example. A torch, a light bulb. Yes, sun, salt, candle, yes. Not candle exactly, but the flame of the candle is a source of light. So these are the objects which are giving light to us. Light is coming out of these objects. So objects which give or emit light are known as luminous objects. See, just remember the spelling of this thing because you will have to write this again and again. So luminous objects. So very simple to understand. Any object which gives light is a luminous object. And what would be the, yes, stars. Stars are also luminous. Yep. Yeah. Moon, you have said moon. So moon is actually not an object which gives off light. Moon reflects light. So tell me, what would be the opposite of the objects which give light? The objects which do not give light. So these are the opposite of the objects which give light. So we call them non-luminous objects. Very simple again. Objects which do not give off light are known as non-luminous objects. Understood? I will have Menti tomorrow on this same topic. As I said, I will make a pinhole camera and I will take a Menti quiz tomorrow. I promise. Okay? Yeah. Yes, Divyam. So these are called non-luminous light objects. So any object which does not give light is non-luminous. For example, I have a water bottle here. Does it give off light? No, it does not. It is a non-luminous object. I have my mouse over here. Is it a luminous object? Not really, but if you turn, you can see that there is some light coming out of it. So that light which is coming is luminous, the LED which is giving off light. I have a candle over here. Is this candle luminous? Is light coming out of this candle? No, it is a non-luminous object. But if you light this up, when there is a flame, it becomes a luminous object. So understand, light coming means luminous, light not coming means non-luminous. Here you can see that moon actually is not luminous because moon does not give off light. What happens is, there is sun, light comes out of sun is a luminous object. I will just draw it for you. So this is sun and light comes from sun, it hits the moon and we see the reflection, and that is why we see light it seems that the light is coming from the moon, but in reality moon is just reflecting light. We'll see what reflection is. Now I have three objects on the screen. Can you see, like, all three of them are glasses, right? It's like a glass from which we can drink water, juice or whatever you want. But there is some difference. Can you tell me what is the difference? Like, not in shape, obviously they're like slightly different, but they're very similar. So what difference is there?
Yeah, the material is different. One of them is made up of steel, but the other two are again glass. But if you ask me, all three of them have a quality which is related to light, in relation with light. यानी हम जब light के बारे में बात कर रहे हैं तो इन तीनों में कुछ तो difference है. Yes, ये opaque है. So I will tell you. अभी for example, see, even I have a glass very similar to that. Can you see behind this glass? What is behind this glass? Can you see? If I keep it in front of me, can you see? No, right? मैं नजर आ रहा हूँ क्या? No. But there is another thing which is in front of my face, but you can still see. See, look at these glasses. ये glasses है. It's right in front of my face, but you can still see me through it, right? Now, why does that happen? Wait, let me wear them back because I cannot see without them. What happens is these glasses, I can see through them, but if I have a glass, I cannot see through it. That is happening precisely because light can pass through the glasses, whereas light cannot pass through steel. So we have a terminology for that, which is if light passes through an object, for example, if there is any object, let's have a look at this thermometer, cover of this thermometer. Light passes through this thing. Okay, light is coming from here, it goes through it. So you can see what is behind this. Can you see what is behind this? Can you still see my face, right, behind this? So this is a transparent object. Now, on the other hand, if I have something, for example, I have a pen. You cannot see behind this pen because this is blocking the light. This is blocking light, so light cannot pass through it. Light is not coming, so you cannot see what is behind this. So now this is an opaque object. My hands are opaque. For example, if I put my hands in front of my face, you cannot see me. But again, if I put my glasses, you can see through it. So if light passes through an object, you can see it. If light does not pass through an object, you cannot see it. So we call objects through which light passes. अगर light pass हो रहा है object में से, तो we call it as a transparent object. इसको हम transparent बुलाएंगे. और अगर light pass नहीं हो रहा है, तो then we call it an opaque object. See? Opaque and transparent. But then there are some objects through which light passes. Like थोड़ा सा light pass होता है, but it's not clear. Like थोड़ा सा light आता भी है, थोड़ा नहीं आता. I'll give you an example. See, I have this pen here. You can see through the pen. But the pen ka cap, which is like colored, you can see that there is a pen going inside, right? You cannot see it fully, but you can see it like partially, halfway. आधा मतलब कुछ दिख रहा है कि हाँ ठीक है. अभी मैं जब इसके अंदर पेन इंसर्ट करूंगा, you can see कि हाँ इसके अंदर कुछ गया है. So now that is light थोड़ा सा जा रहा है, partially जा रहा है. Like in parts light is going, some parts of light are not going. तो partially light is going through it. तो हमको आधा दिख रहा है, आधा दिखाई नहीं दे रहा है. So such objects are called as translucent objects. Transparent यानी अगर लाइट फुल्ली पास हो रहा है इट्स ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा पास हो रहा है इट्स ट्रांसलूसेंट, अगर कुछ भी पास नहीं हो रहा है तो देन इट्स ओपेक. So what is the difference between them? This glass is transparent. I don't know how to write with this pen, man. Second one is translucent. I am not going to write now, you just remember it, okay? बीच में जो आपको दिख रहा है blue glass, it's translucent क्योंकि इसमें से थोड़ा सा लाइट जा रहा है. ये ब्लू कलर में है, इसमें से थोड़ा कलर्ड है, थोड़ा सा नजर आ रहा है, थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा है. और जो लास्ट स्टील वाला ग्लास है ऐसा, इसके पीछे से आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, देन इट्स ओपेक यानी इसमें से लाइट पास नहीं हो रहा है. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? ये सबको समझ आया ना? हम छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे इसमें. यस, ओके, आप सबको समझ आ रहा है, नाइस. रामभा जी आपको समझ नहीं आया? ओके, मैं फिर से आपको बता देता हूं. अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट पास होता है और उसके पीछे का दिखाई दे रहा है, जैसा ग्लास हुआ या ये ट्रांसपेरेंट बॉटल है, इसके सी यू कैन सी माई फेस थ्रू इट, या फिर यू कैन हैव अ लुक एट माई स्पेक्टेकल्स. मेरा जो चश्मा है इसमें से यू कैन स्टिल हैव अ लुक एट माई फेस. मैं इसको बिल्कुल पास लाता हूं फिर भी यू कैन सी थ्रू इट. कैन यू सी? आपको नजर आ रहा है इसमें से?
इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से लाइट पास हो रहा है, इसमें से आपको नजर आ रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। वैसे ही मेरे पास ये एक ग्लास है, ये ग्लास में क्या है, आपको इसके पीछे से नजर नहीं आ रहा है। इफ आई ब्रिंग इट वेरी क्लोज, कैन यू सी बिहाइंड इट? आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइट को ये ब्लॉक कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट ओपेक हो गया क्योंकि ये लाइट को ब्लॉक कर रहा है, इसमें से आप देख नहीं सकते। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जैसा कलर्ड प्लास्टिक हो गया कि उसमें से आपको कुछ कुछ दिखाई दे रहा है बट इट्स नॉट वेरी क्लियर, तो वो ट्रांसलूसेंट हो गया। आई थिंक इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। अभी आपको समझ आ गया ना? नाइस। अभी छोटा सा एक्सरसाइज करता हूं मैं। आई हैव रिटन सम थिंग्स ऑन द टेबल। आप मुझे बताओ कि ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। फर्स्ट वन इज रबर। इज रबर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक? ओके, रामा जी को क्लियर हो गया, नाइस, बहुत अच्छा है। और किसी को डाउट है तो वो भी कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। तो ठीक है, रबर इज ओपेक, कूल। रबर के थ्रू आपको दिखाई नहीं देता है, तो रबर इज ओपेक। व्हाट अबाउट वाटर एंड कलर्ड प्लास्टिक? पानी में से दिखाई देता है ना आपको, राइट? नो जनार्दन, इट्स नॉट ट्रांसलूसेंट, वाटर इज ट्रांसपेरेंट क्योंकि आपको पानी में से दिखाई देता है। पानी ब्लॉक नहीं करता है लाइट को। बट कलर्ड प्लास्टिक जो है, फॉर एग्जाम्पल दिस पेन कैप विच इज देयर, विच आई शोड यू जस्ट नाउ, यू कैन सी कि ये कुछ ब्लॉक कर रहा है और कुछ ब्लॉक नहीं कर रहा है। देन इट मीन्स द कलर्ड प्लास्टिक इज ट्रांसलूसेंट। अंडरस्टूड? अगर ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो विल मूव फॉरवर्ड, नहीं है तो विल राइट मोर थिंग्स इन द टेबल एंड वी विल डिस्कस दोस थिंग्स एज वेल। आपको कोई डाउट है, कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है? जस्ट आस्क मी एनी ऑब्जेक्ट। ग्रेट, yes Simi, it's translucent, correct. Okay, ठीक है, now we'll move forward to the very next thing. Okay, Rama ji, very clear. Simi को more examples चाहिए, ठीक है, we'll discuss. Simi, I have this katora with me. Is this transparent or is this opaque or is this translucent? दिस इज ओपेक क्योंकि इसमें से पास नहीं हो रहा है। व्हाट अबाउट दिस बॉटल? ये जो बॉटल है, ये परफ्यूम बॉटल है, एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट पास सम लाइट थ्रू इट। तो आप देखना, सी लाइट इज पासिंग थ्रू दिस बट इट्स नॉट वेरी क्लियर कि इसके पीछे क्या है। अंडरस्टूड? देखो ये काफी डिफ्यूज होके आ रहा है लाइट, राइट? बट इसका कैप देखो, कैप के पीछे से आपको लाइट नजर नहीं आ रहा है। द कैप इज ब्लॉकिंग इट बट दिस पार्ट is not blocking it, but it's not clear as well, clear भी नहीं है, which means the cap is opaque and the bottle is translucent. Okay, अभी समझ आ गया? Should we move forward now? Great, great. चलो अभी सबको ये वाला कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गया है, we'll move forward. अभी हम बात करते हैं शैडो की। ओके, तो इमेजिन कि यहां पे एक लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स में आपको क्या चाहिए, टॉर्च चाहिए, बल्ब चाहिए या सनलाइट रखूं मैं? ठीक है, विल हैव अ बल्ब। ये बल्ब है और बल्ब इसमें से लाइट आ रहा है। तो जब इसमें से लाइट ये आ रहा है, दिस लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर, व्हाट इज हैपनिंग इज, मुझे ये बोला पेंसिल ओपेक है क्या ट्रांसपेरेंट है, और इज इट ट्रांसलूसेंट? हनिया ने काफी अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं, पेपर, माउस, मोबाइल, फ्लावर्स, ये सारे के सारे ओपेक है। पेपर बट अगर पतला हो तो ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है। यस, सो सिमी ने बोला कि पेंसिल ओपेक है, सो द पेंसिल इज ओपेक नाउ। तो क्या होगा, लाइट उसमें से पास होगी या लाइट ब्लॉक होगी? इट इज ओपेक, so obviously the light is going to be blocked by it. तो जब लाइट ब्लॉक होगी तब क्या होगा, यहां पे हर जगह तो ये सारे एरिया में लाइट आ जाएगी, बट यू सी दिस डार्क पार्ट, लेट मी चेंज द कलर।
ये आपको जो डार्क पार्ट दिख रहा है ना, जहां पे मैंने ऐसा भी ये ग्रीन मार्क किया है, दिस एरिया, यहाँ पे लाइट नहीं आएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे शैडो आ जाएगा। बेसिकली जब लाइट को कोई चीज ब्लॉक करती है तो वहां पे शैडो आ जाता है। अंडरस्टूड? आई शो यू, मैं मेरे फेस पे शैडो अभी बताऊंगा आपको। देखो मैंने अभी ये टॉर्च ऑन किया है, राइट? अभी मेरे सामने मैंने ऐसे ये पेन रखा, यू कैन सी अ शैडो ऑन माय फेस, राइट? कैन यू सी द शैडो ऑन माय फेस? मैं ऐसा हाथ भी रखूंगा तो यू कैन सी दैट शैडो इज मूविंग ऑन माय फेस। मींस जब मैं लाइट को ब्लॉक कर रहा हूं, लाइट मेरे फेस पे नहीं आ रहा है, तो जो पार्ट है वो शैडो है। तो शैडो कब फॉर्म होता है? शैडो फॉर्म्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आ गया, जैसे यहाँ पे सनलाइट है, यू सी दिस, ये सन है, सन में से ऐसा लाइट आ रहा है, ऐसे 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 स्ट्रेट लाइंस में। देन व्हाट हैपेंस इज, जो पेड़ है यहाँ पे, जो ट्री है, ये ट्री लाइट को ब्लॉक कर रहा है। जैसे ही ट्री ने लाइट को ब्लॉक किया, वी हैव द शैडो ऑफ द ट्री ओवर हियर। अंडरस्टूड? तो शैडो इज फॉर्म व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। और सेकंड में हमको क्या समझ आ रहा है? सी, सन इज ऑन दिस साइड, सन लेफ्ट पे है, राइट? सन इज ऑन दिस साइड, ये साइड सन है, और शैडो कौन सा साइड है? शैडो इज ऑन द राइट साइड। इससे हमको क्या समझ आया? अगर लाइट सोर्स इस तरफ है तो शैडो उसके ऑपोजिट साइड आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हेन आई वाज कास्टिंग लाइट फ्रॉम हियर, लाइट राइट साइड से आ रहा है, मैंने पेन बीच में रखा, शैडो कहां पे आ गया? लेफ्ट साइड पे आ गया, राइट? हाँ लेफ्ट, बट मैं राइट, इंग्लिश वाला राइट बोल रहा था, ठीक है? तो शैडो ऑलवेज फॉल्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट। लाइट जो भी साइड हो, शैडो उसके ऑपोजिट साइड आएगा। अंडरस्टूड? इसीलिए सुबह के टाइम हमारा जब शैडो आता है वो वेस्ट की तरफ आता है, बिकॉज सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से सनराइज होता है, तो हमारा शैडो फॉल्स ऑन द वेस्टर्न साइड। फिर अगर हमारा जब दिन हो जाता है एट नून, शैडो इज एट द बॉटम, क्योंकि सन इज ऑन द टॉप। सन ऊपर से ऐसा लाइट आ रहा है तो हमारा शैडो बिल्कुल बॉटम पे आता है, जमीन पे डायरेक्टली। और फिर सनसेट के टाइम पे जब शाम हो जाती है तो आवर शैडो कम्स ऑन द ईस्टर्न साइड। ठीक है ना? तो उसके बाद में हमको एक और इंपॉर्टेंट चीज है, शैडोज हम जब देख रहे हैं तो शैडो ऑलवेज फॉल्स ऑन समथिंग, राइट? शैडो ऐसा हवा में तो दिखाई नहीं देता है कि है ना, शैडो कहीं पे आ गया रैंडमली कि ओ मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे पीछे पीछे ऐसा शैडो हवा में आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं आता। शैडो ऑलवेज फॉल्स ऑन समथिंग, चाहे वो वॉल रहो, चाहे वो ग्राउंड रहो, चाहे मेरा फेस रहो, एनीथिंग, इट नीड्स टू बी अ सरफेस। एनी सरफेस, कोई भी हो सकता है, उसी के ऊपर शैडो जब फॉल होता है तब दिखाई देता है। उसके लिए हम इसको, दिस सरफेस विल बी कॉल्ड एज स्क्रीन। तो शैडो कैन ओनली बी सीन ऑन अ स्क्रीन। नाउ व्हाट इज अ स्क्रीन? स्क्रीन कैन बी एनी सरफेस, एनी सरफेस कैन बिकम अ स्क्रीन, एनी नॉन लुमिनस। अगर उसमें से लाइट आ रहा है तो वो नहीं बन सकता। सो व्हाट हैपेंस इज वी नीड अ स्क्रीन फॉर लुकिंग एट शैडोज। क्लियर है ना? किसी को समझ आया? दिस स्क्रीन इज डिफरेंट फ्रॉम हमारा मोबाइल वाला स्क्रीन, क्योंकि वो लुमिनस है। मोबाइल वाला स्क्रीन में से लाइट आ रहा है, ये स्क्रीन में से लाइट नहीं आता है। एनी सरफेस, किसी के ऊपर, चाहे वो दीवार होगी या जमीन होगी, आपकी आपकी बुक भी हो सकती है, आप खुद हो सकते हो, अगर शैडो आ रहा है तो इट मींस दैट इज अ स्क्रीन। बस हमको देखने में हेल्प हो रहा है। कूल, नाइस, आप लोग को समझ आ गया। नाउ वी लुक एट अ फ्यू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शैडो। मेरा पेन गिर गया था। So now what happens is the outline of the shadow matches the outline of the object. इसका क्या मतलब हुआ? For example, if you are holding a book, okay, मैं यहाँ पे बुक ड्रॉ करता हूँ एक, समझो ये बुक है, okay. Now if this is a book, okay, this is a book, right? Now what happens is, and you also need to have a source of light.
यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टॉर्च, कूल, इसमें से लाइट ऐसे आ रहा है। नाउ ये बुक का शैडो भी तो आएगा ना कहीं, तो द शैडो विल फॉल समवेयर, सो द शैडो विल कम ओवर हियर। फॉर एग्जाम्पल I'll change the color for this. Yeah. This is the shadow of the book now. Okay. तो हमने देखा कि शैडो जो है बुक का, दैट इज सिमिलर इन द आउटलाइन, इन द शेप। ये रेक्टेंगल है तो ये भी ऑलमोस्ट रेक्टेंगल है, लेकिन हमने बुक का शैडो देख के हम बता सकते हैं कि बुक का शेप क्या होगा, राइट? So the outline of the shadow matches the outline of the object. Similarly, the shadows are always darker irrespective of the color or the light of the object. जैसे हमने आपको लास्ट इमेज में बताया था कि there is a tree. ट्री का कलर क्या है? ट्री का कलर है ग्रीन। ट्री के ट्रंक का कलर क्या है? उसका कलर है ब्राउन। लेकिन शैडो का कलर क्या है? शैडो इज ऑलवेज डार्क। ब्लैक होगा शैडो तो हमेशा। वो उस पर डिपेंड ही नहीं करता कि ऑब्जेक्ट कौन से कलर का है। एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट इज ओपेक, उसका शैडो वुड बी डार्क इन कलर। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्लोजर द सोर्स ऑफ लाइट इज द लार्जर द शैडो विल बी। इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा एक टाइम। सो ये मैंने लाइट ले लिया ऐसे। नाउ आई हैव दिस पेन। अब की बार थोड़ा सेकंड दूसरा पेन लूंगा। यू सी, ये जब ऐसा दूर है ना, कैन यू सी द शैडो ऑन माय फेस, राइट? इट्स ऑन माय लिप्स राइट नाउ, लिप्स के पास है। व्हेन आई ब्रिंग द लाइट क्लोजर, द शैडो इज गेटिंग लार्जर, राइट? देखो शैडो कितना बड़ा हो गया। अभी मैं ऐसे पास ले जा रहा हूं तो इट बिकम्स स्मॉलर। तो ऐसा पता चलता है कि जब लाइट सोर्स कम क्लोजर क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट, राइट, तो उसका शैडो बड़ा हो जाता है बिकॉज इट्स ब्लॉकिंग मोर लाइट नाउ। और जब दूर चला जाता है तो इट ब्लॉक्स लेसर लाइट, क्योंकि छोटा हो जाता है, लाइट फैल जाता है, साइड से चला जाता है लाइट। तो द क्लोजर द सोर्स ऑफ लाइट इज द लार्जर द शैडो वुड बी। ओके, लैग हो रहा है। लेट मी जस्ट सी, ये लैग हो रहा है, क्या हो रहा है अभी? इज इट फाइन? ओके, ठीक है, अभी ठीक हो गया, लैग नहीं है अभी। कूल कूल कूल। तो जैसे मैंने बोला था, शैडो का आउटलाइन हमको समझ आता है, तो शैडो गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपने ये गेम अभी खेलना है, आपको क्या करना है, ट्यूबलाइट के पास खड़ा हो जाओ या सनलाइट में बाहर क्लास के बाद में चले जाओ एंड ट्राई टू मेक ऑल दिस, यू नो, हैंड से ऐसा शेप्स बनाओ जिसको आपको शैडो आएगा। इफ यू मेक योर हैंड लाइक दिस, राइट, अभी तो आपको दिख रहा है कि दिस इज जस्ट अ हैंड, बट इफ यू सी द शैडो, अगर आप इसको वॉल पे ऐसा शैडो इसका देखोगे तो इट लुक्स लाइक अ बर्ड। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे आपको लाइक कई एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यू हैव ऑलमोस्ट, यू नो, 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट एनिमल्स जो आप हाथ से बना सकते हैं। सो यू गो एंड ट्राई दिस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और है ना, इसको ट्राई करके देखो एक टाइम। सी इफ यू कैन मेक शैडोज। एंड ये सारा प्रिंसिपल थोड़ा वॉल के पास बना के देखना शैडो, फिर थोड़ा दूर जाके बना के देखना। सी हाउ इट अफेक्ट्स द शैडो। अगर आप वॉल के पास जाओगे ना तो शैडो थोड़ा सा लाइक आप अगर रूम के अंदर बना रहे हो, सनलाइट में ये नहीं होगा, बट इफ यू आर यूजिंग कैंडल एज अ सोर्स ऑफ लाइट, if you are going closer to the candle, the shadow will become larger. If you are going away from the candle, the shadow will become smaller and sharper as well. Okay, cool. So now we will do another small experiment. So there is this guy. This guy, इसको क्या नाम देना है अभी? Cool cool. तो ये बंदे का नाम होगा मोहन। Cool. ये मोहन है और ये क्या हुआ? ये कैंडल है। Cool. This is candle. This is मोहन। अभी हम क्या करेंगे? We are going to draw a pipe.
ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने एक पाइप बनाया, कूल। तो नाउ दिस इज द पाइप, और ये कैंडल का लाइट इसमें से पास हो रहा है, फाइन। ऐसे ऐसे लाइट इज गोइंग थ्रू दिस, ऐसा स्ट्रेट आता है एंड इट हिट्स द आई। तो आप ये नहीं, अगर आप पाइप में से ऐसे करके देखोगे, विल यू बी एबल टू सी द लाइट? आपको कैंडल लाइट नजर आएगा कि नहीं आएगा? Hania is asking, sir, what if the glass is very dirty? Then we can't see what's on the other side clearly. So will it be translucent? See, if the glass is very dirty, right, so it will become translucent. अगर उसके अंदर कुछ समझो उसके एल्गे आ गया ग्रीन कलर का, तो वो ट्रांसलूसेंट बन जाएगा। बट इफ द ग्लास इज क्लीन, इट्स ट्रांसपेरेंट। ओके, तो अभी ये स्ट्रेट लाइन है, तो विल यू बी एबल टू सी द लाइट? अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं ऐसे, तो लेट मी हैव दिस, तो यहां से भी स्ट्रेट लाइन में ऐसे लाइट आके आपको आंख में टच करेगा, सो यू विल बी एबल टू सी द लाइट। यस और नो? यस, यू विल बी एबल टू सी द लाइट। नाउ लेट्स सी इफ यू नो दिस पाइप इज नॉट सो स्ट्रेट। ये पाइप को थोड़ा बेंड करते हैं अभी। ओके, अभी मैं कर रहा हूं लाइट को बेंड। पाइप यहां से आएगा ऐसे, यहां पे इतना बेंड होगा, फिर वापस ऐसे जाएगा। नाउ विल यू बी एबल टू सी द लाइट थ्रू इट? अभी तो पाइप क्रॉस हो गया, ऐसे स्ट्रेट जाते जाते बीच में ऐसे 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 डाउन, अगेन इट्स गोइंग स्ट्रेट। विल यू बी एबल टू सी द लाइट? अभी देखो लाइट ऐसे आ रहा था, नाउ दिस पार्ट विल स्टार्ट ब्लॉकिंग द लाइट, तो लाइट आपको नजर नहीं आएगा यहाँ पे, यू वोंट बी एबल टू सी एनी लाइट। इससे क्या पता चला हमको? यू ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट एट होम एक्चुअली, इफ यू हैव अ पाइप, बस ऐसे करके है ना, ट्राई टू लुक एट अ ट्यूब लाइट, स्ट्रेट रख के पाइप को, देन यू ट्राई एंड बेंड इट, बेंड करके देखो कि लाइट फिर भी नजर आता है कि नहीं आता है। यस, रामबाजी आर करेक्ट, यू वोंट बी एबल टू सी द लाइट बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये लाइन ऐसे स्ट्रेट जाता है यार, बिल्कुल है ना, जैसा लेजर लाइट के साथ हम लोग खेलते हैं, तो लेजर लाइट कभी धूल होगा या फिर बारिश हो रहा होगा, तो यू कैन सी दैट द लेजर लाइट इज गोइंग स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे से लाइट में जाता है, राइट? एग्जैक्टली, तो दैट इज लाइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो अगर आप उसको नहीं क्रॉस, अगर बीच में से आप उसको ब्लॉक कर दोगे, तो लाइट आपको नजर नहीं आएगा। ओके, सिमिलरली व्हाट हैपेंस इज, अभी लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मैंने बोला आपको स्ट्रेट लाइन में लाइट जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। What happens? There is a mirror over here. The light touches the mirror and it changes its direction, और ऐसे वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, रिफ्लेक्ट कैसे होता है? जैसा मैंने यहां पे आपको इमेज में बताया। See, this is the light coming. यहां पे ऐसे आया, it touched the mirror and it reflected, वहां से रिफ्लेक्ट हो गया। अंडरस्टूड? और हम जब मिरर पे लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो वी सी अ वेरी क्लियर इमेज। जैसा हमने शैडो देखा, शैडो में देयर इज नो कलर, नथिंग, कुछ नजर नहीं आता है, लेकिन शेप समझ आता है शैडो में, राइट? मोस्टली शेप समझ आ जाता है। Similarly, in the mirror से शेप नहीं, we can see the color, we can see the size, we can see the shape, we can see everything in the mirror. यार मिरर तो पता है, सब सुबह अपने घर में ऐसे ब्रश करते हुए सामने मिरर ही रखा होता है ना, you see yourself in the mirror. अगर देखना है कि वो मेरे बाल ठीक है कि नहीं है, देखो मुझे यहाँ पे बाल थोड़ा खराब हो गया, how do I see that? I look myself in the mirror. अगर मुझे देखना है कि है ना वो मेरा फेस पे कुछ लग तो नहीं गया, यहाँ पे कुछ ऐसा, should I clean my face? So I look in the mirror because mirror gives a very clear image to us. Okay? Understood? तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। आज हमने क्या क्या पढ़ा एक टाइम, लेट्स गो थ्रू इट। सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स थिंग्स विजिबल, व्हिच इनेबल्स अस टू लुक एट थिंग्स। ओके, दैट इज लाइट, एंड लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी हमने देखा है। सेकेंडली, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स,
sorry, there are two kinds of objects. Objects which emit light, objects which do not emit light. यानी ऑब्जेक्ट जो लाइट देता है इसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एंड ऑब्जेक्ट जो लाइट नहीं देता है उसको हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. ओके, देन देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो लाइट के साथ इंटरैक्ट करते हैं. दैट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं. देन देयर इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू हमें थोड़ा दिखाई देगा, थोड़ा दिखाई नहीं देगा, इट बिकम्स वेरी डिफ्यूज्ड, ऐसे हो जाता है. एंड थर्ड वन इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जिसके थ्रू हमको दिखाई नहीं देता है. ह्यूमन बीइंग्स आर ओपेक, आवर स्पेक्टेकल्स आर ट्रांसपेरेंट, और कुछ कलर्ड प्लास्टिक्स है तो दोज आर ट्रांसलूसेंट. ओके, वेरी थिन पीस ऑफ पेपर, जैसा हमारा फिल्टर पेपर होता है या फिर बटर पेपर होता है, ट्रेसिंग पेपर, दैट इज ट्रांसलूसेंट. बट हम जो बुक में लिखते हैं दैट पेपर इज स्टिल ओपेक, राइट. उसके बाद में हमने पढ़ा कि अगर ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के आगे आ जाए, जैसा यहाँ पे ये लाइट के आगे मेरा हाथ आ गया, तो इट्स कास्टिंग अ शैडो ऑन माय फेस, right? You can see my fingers also. If I open my hand, you can see the fingers. If I close my hand, you just see one big shadow. So there are shadows. तो अगर ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट कास्ट करता है तो इट कास्ट्स अ शैडो. अ शैडो always forms on a screen. A screen can be any surface. It can be the wall, it can be the ground, it can be your face, it can be your t-shirt, it can be your clothes, anything जिसके ऊपर shadow आ सकता है, that becomes a screen. And shadow always falls in the opposite direction of the source of the light. अगर sun ईस्ट में है तो shadow west में आएगा. अगर टॉर्च आपके फेस में ऐसे दिखा रहा है तो shadow आपके पीछे आएगा. अगर कोई पीछे से लाइट डाल रहा है तो shadow आपके आगे आएगा. Similarly, the outline of the shadow matches the outline of the object. तो हमको इससे we get an idea of the shape of the object. And shadows are always dark in color, as well as shadow, अगर आप ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स के पास लोगे तो शैडो बड़ा हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट आप लाइट सोर्स के दूर ले जाओगे तो ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा. एंड लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और इफ लाइट हिट्स अ मिरर, अगर मिरर के ऊपर लाइट ऐसे आ जाता है तो इट रिफ्लेक्ट्स इट. दैट्स हाउ वी सी. तो अभी क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे बैठा हूं, वहां से लाइट आ रहा है, यहां से लाइट आ रहा है, इट्स कमिंग ऑन माय फेस एंड इट्स रिफ्लेक्टिंग, सो यू आर एबल टू सी माय फेस बिकॉज ऑफ दैट. एवरी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट जो हमको नजर आती है. ओके, एंड मिरर्स गिव अस अ वेरी क्लियर इमेज. तो हम इसीलिए मिरर यूज करते हैं, सो वी कैन लुक एट अस. ओके ओके, अमित अटल, go and study. So आज का हमारा चैप्टर हो गया है. Thank you very much for attending. Tomorrow I will try to take the class at the same time, and we will do an experiment tomorrow. We will make a pinhole camera, and tomorrow there is going to be a Menti quiz on the same chapter of things which I taught today. तो आप ये वीडियो को फिर से देखना, अपने फ्रेंड्स को भी बुलाना जो भी Menti quiz में इंटरेस्टेड है, get everyone. और कल मैं Menti quiz लूंगा on this chapter, and we are going to do a cool experiment as well. Okay. साथ ही साथ go and subscribe to this channel, and apart from this channel, Unacademy has made a new channel for chess. Okay, जहाँ पे हम लोग chess सिखा रहे हैं. We have experts, champions of chess, chess masters, everyone who is going to give you tips, tricks, कैसे खेलना है, उसको learn कैसे करना है, सारी चीजें आप वहाँ पे बहुत आसानी से सीख सकते हो. उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा. And if you want to connect with me, you can click on in the description there is a link on which you can connect with me on the Unacademy app. अगर आपको कोई और doubts है तो you can still ask them in the comment section. And that's all for today. Hope you liked the video. Go and subscribe to our channel. Bye bye. Okay, bye Simi. Bye Virika. Nice, very nice talking to you guys. So I will end the stream now. Thanks.